Yeah. So we will wait for 1 minute. Let everybody joins. Then we will start. Yeah. So good evening, everyone. This is Fauzan. I work as client service quant in Tradetron, and today we are going to discuss strategy creation based on pivot points. So this was much awaited video. So basically, we will start with strategy info block. As always, we start with for the new beginners. So we will start with strategy info block. Then we will move on how to create strategies based on the pivot points. Okay. So basically, this is the strategy info block. Here we can mention the name of the strategy, as I have already mentioned. Okay. You can assign certain tags over here based on your strategy, and you can have the description of your strategy. Okay. So basically, this block is helpful for the creators who wish to list their strategies on Tradetron's marketplace, so their subscribers can get an idea about it. So this is the condition builder block, and this is the position builder block. So here we assign certain conditions of our strategy. Based on these conditions, whenever getting satisfied, the positions will be taken care of. Okay. So today, as I already told you, that today we are going to create strategy based on pivot points. So I will just give you a glimpse. What does pivot point actually? How does pivot point actually works? So for that, I have opened one chart. Okay, and the instrument selected is Bank Nifty. You can select it on any instrument. This is just to give you an idea how to create. Okay, so basically, pivot point consists of 7 lines. Okay, 3 lines are for resistance, 3 lines are for supports. Okay, S1, S2, and S3. Okay, so here are 3 lines for support, 3 lines for resistance, and middle line is called as pivot line. So now we will see how we can track the like resistance, or how we can track the support of any instrument. So it's pretty simple. I will just start with very basics. Okay, so let's say we are going to create a strategy. So now we will first assign the time of our strategy. Let's say we want to start our strategy whenever the time is greater than or equal to 9:30, let's say. Okay, so time-based condition, we are taking time-based condition. Then we want to check for the let's say we want to check for the reversal of our reversal trend. Okay, so for that, what we will check is whenever the candle is closing above the R1. Okay, whenever the candle is closing above the R1, and it is the high of the candle is above the R1 and the close is below the R1. Okay,
So we will short one lot of future, or we can we can buy one lot of put, or something like that. So to give you a benefit of the shortcomings, it means I mean short trend of the market. So for that, first we will select the position, and please note while using the pivot points, it's always better. It is always recommended to use on daily time frame in Tradetron. The reason being is the pivot points which are getting selected are based on the daily basis. Okay, even you can use it on lower time frames as well, but in lower time frames it will check for only for the previous candle. Means with every change in candle the pivot values will be different, so it will be difficult for you to track which pivot point was existed at that time. So it's always better to track on the basis of day time frame. So we will select here as pivot point, and the position should be 0. The reason being is whenever you are selecting here as 0, the current candle which is ongoing, like let's say like this 27th August candle. So this candle will track the pivot values of this previous candle, correct? Because we track pivot of previous candles. So the current candle takes the pivot values of previous candle. So for that we will use 0. Okay, because on the current candle we are checking for the previous pivot. If you want to check for previous day, I mean to say, if you want to check this pivot values of previous to previous day, then it should be -1. Okay, so for previous day pivot value it should be 0. Now instrument name, it will be NFO. As on our chart the instrument was Nifty Bank, so it's straightforward Nifty Bank. Okay, now in this we will check for the pivot type. Okay, Fibonacci. Okay, and here are the pivot lines selection. Okay, so as we are tracking here, the high is, as you can see the high over here. Okay, it's mentioned over here. The high is 35,727.9. Okay, and the close is 35,627.8. Then it is clearly visible that the high is greater than the close value. So we want to check for the this, we can say, resistance. So now what we will check for, here the line is R1. So we will here select R1. So we will select here close as well. The R1 value is position close okay. So first we will check for the high. I think it will be better. So just we have to copy and paste it over here. So we are checking the close should be less than the pivot value. Okay, and high should be greater than the previous pivot value. So now we are checking over here is whenever the high is above the pivot point, that is R1, okay, and the close is below that R1, okay. So in that scenario, what we are doing over here is we are actually shorting one lot of Bank Nifty future to gain the benefit of the short trade. I mean sell trade. You can even select put, or you can even sell call. Okay.
So now what we are checking over here is whenever the close value, okay, I will place it again. Okay, so we are here checking for the reversal. So now what we're checking over here is whenever the high value is above the R1. So the current day high value is above the R1. Okay, and the close value is below the R1. Okay, so in that scenario, what we are doing is we are shorting the one lot of Nifty Bank future. Okay, similarly we will check for the bullish reversal also. Okay, so for that we will simply copy it, create another set for this bullish momentum, and in case of this R1 we'll check for S1. Okay, so basically what we will check is if the, see here for this candle we can refer, if the low is no, this is a pivot one, let's check for the S1. So yeah, let's check for this one, this candle, or yeah, this candle. So what we will check is whenever the low, so I will just give you an example over here. Okay, let's say this is the S1. Okay, consider this as S1 for now. So whenever the low of the candle is below the S1, okay, and the close is above the S1, so we will check here for the bullish momentum. Means I mean to say the trend reversal. Okay, so whenever the low is below S1, so like this you can drag and drop over here. Okay, so whenever the low is below the S1, okay, and close is above the S1, so what we will do here is we will buy one lot of Nifty Bank future. So the whole idea to give you over is how to use the pivot point indicator. Okay, so you can use it in any of your strategies based on your conditions requirement or your existing requirements. I mean to say trading pattern. You can use it. So I'm just showing you how to use this indicator. So all these are just example for the example purpose. Okay. So like this, we will create, and for the exit, we can have the stop loss. Like let's say stop loss of 10%. Whenever the LTP. So in this case, we are actually using the futures. So 10% will be much higher. So we can make it in terms of points, we can say.
So whenever the LTP is greater than trade instrument price plus let's say 100 points. So if Bank Nifty is moving 100 points from our traded price, then it will exit because we are entering short trade in the set one. So that's why. Simply, I'm just copying and pasting it over here in this second set. This is our long trade. So we'll just change the signatures. And here it will be set 2. And it will be minus 100. Okay. So like this, you can create a simple pivot-based strategy. Okay. So this is just to give you an idea how to use this indicator. And we can also have the universal exit conditions like PNL based conditions. And please note this this PNL condition has to be used only in universal exit block because this keyword works on the entire strategy level and not on the set level. Okay. So this tracks the PNL of the entire strategy. Let's say you have 2 sets in your strategy. Okay. So this will track the PNL for both of the sets, not for the individual sets. You can also have the time-based condition, like whenever the time is greater than 3 p.m. So in Tradetron, there is a 24-hour format. So you can have for 3 p.m. it should be 1500. So like this, you can have universal exit conditions as well. And let's look this advanced settings. So basically ये जो advanced settings है, ये भी set level पे काम नहीं करता है, ये strategy level पे काम करता है. By the means of that, suppose अब अगर यहाँ पर आप कोई भी settings कर रहे हो और आपके 2 sets है, तो आपके इन दोनों sets पर ये apply होगा. अगर आप कोई entry के ऊपर, जैसे अभी यहाँ पर tranching size है, इसका मतलब क्या होता है? Suppose if you are keeping this as 50% and you have 10 lots in your strategy to trade. तो अब पहले 50 अगर यहाँ पर जो भी अगर आप 50% सिलेक्ट करते हो तो उस 10 लॉट्स का 50% होता है 5 लॉट्स. तो जो भी ये स्पेसिफाइड टाइम है, पहले 5 लॉट ट्रेड होंगे, उसके बाद ये स्पेसिफाइड टाइम यानी 10 सेकंड्स के बाद रिमेनिंग 5 लॉट जो है वो ट्रेड होंगे. और ये एंट्री और एग्जिट दोनों के केस में एप्लीकेबल है. एग्जिट के टाइम भी पहले 5 लॉट एग्जिट होंगे, उसके बाद ये इतने सेकंड्स के बाद दूसरे बाकी के 5 सेट जो है आपके 5 लॉट्स वो एग्जीक्यूट होंगे, एग्जिट होंगे. आई मीन यहाँ पर आप टाइम चेंज कर सकते हो 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, व्हाटएवर एज पर योर चॉइस. ओके. ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्लॉक. यहाँ पर आप आपके स्ट्रेटेजी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हो. सपोज अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका एक्टिवेट करवा रहा है 1000 PNL पे, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1000 रख सकते हो आप. ओके. तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका PNL 1000 रीच होगा, उसके 2-3 सेकंड के वहां पर होल्ड होना चाहिए. वहां पर मतलब एटलीस्ट 2-3 सेकंड्स के लिए आपका PNL 1000 के आसपास होना चाहिए. जैसे ये 1000 होगा, वैसे ही आपका TSL जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका एक्टिवेट हो जाएगा. जो भी आप यहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई करोगे उतने पॉइंट से ये इंक्रीज होगा. यानी सपोज अगर आपका PNL 10 रुपये से बढ़ रहा है या 100 रुपये से बढ़ रहा है, इजी समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ. यानी जब आपका PNL 100 रुपये से बढ़ रहा है तो आपको क्या चाहिए, आपका प्रॉफिट TSL 100 रुपये से बढ़ाना है. तो जब आपका PNL 1000 रुपये पे होगा तो ये TSL सेट रहेगा 0 पे. जैसे ही आपका PNL जो है वो 1100 हो जाएगा, ये TSL आपका 100 हो जाएगा. जैसे ही आपका PNL 1200 हो जाएगा, वैसे ही आपका TSL 200 हो जाएगा. मतलब आपके PNL 1000 रुपये के बाद आपके PNL में जितना भी हर 100 रुपये का गैप आ रहा है, उसमें आपका TSL हर 100 रुपये से बढ़ेगा. ओके. So this is the reactivate on exit after settings.
और जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस सेटिंग जो है एंटायर स्ट्रेटेजी लेवल पे काम करती है, ना कि पर्टिकुलर सेट लेवल पे काम करती है। वैसे ही ये जो एग्जिट है, रीएक्टिवेशन सेटिंग्स है, ये यूनिवर्सल एग्जिट पे काम करती है। इसका मिनिमम टाइम 2 मिनट्स है, आप इससे कम नहीं रख सकते हो, मिनिमम आपको 2 मिनट्स रीएक्टिवेशन रखना होगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके यहाँ पर दो एग्जिट्स है, राइट, एक सेट एग्जिट है और एक यूनिवर्सल एग्जिट है। तो ये जो आपके रीएक्टिवेट और एग्जिट आफ्टर ये जो सेटिंग्स है, ये यूनिवर्सल एग्जिट के बेस पे वर्क करेगी। इसका मतलब है सपोज अगर आपकी स्ट्रेटेजी, अगर समझो पीएनएल या इसके अंदर जो भी कंडीशंस मेंशन है उसके बेसिस पे अगर एग्जिट लेती है, देन आफ्टर दिस स्पेसिफाइड टाइम दैट इज 2 मिनट्स, ये वापस रीएक्टिवेट हो जाएगी। सो यहाँ पर है चेक कंडीशंस एवरी। सो बेसिकली ये जो ब्लॉक है ये आपकी कंडीशन चेकिंग के लिए यूज होता है। अब एक एल्गोरिथम में जो हम कंडीशंस देते हैं, तो सपोज करते हैं कि एक एल्गोरिथम को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 से 4 सेकंड्स लगते हैं। बेस्ड ऑन द कंडीशंस ये टाइम वेरी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक साइकिल का मतलब होता है एंट्री ब्लॉक से लेके, यहाँ से लेके इस एंट्री ब्लॉक से लेके इस यूनिवर्सल एग्जिट तक जो एक साइकिल होती है उसको जो कंडीशन चेक्स होती है उसको एक साइकिल बोलते हैं। तो अगर एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अगर उसको 4 सेकंड्स लग रहे हैं, अगर ये कंटिन्यूअसली सिलेक्टेड है तो हर 4 सेकंड में आपकी कंडीशन चेक होंगी। लेकिन अगर ये 1 मिनट सिलेक्टेड है या उससे ज्यादा, ये अगर 5 मिनट सिलेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है, हर 4 सेकंड के बाद ये एडिशनली इतना टाइम रुकेगा, यानी 1 मिनट और रुकेगा, यानी 60 सेकंड्स रुकेगा, और उसके बाद फिर आपके कंडीशन चेक होंगे। सपोज अगर उस लैप्स पीरियड में, यानी उस 1 मिनट में अगर कोई स्ट्रेटेजी की कंडीशन ट्रू होती है, तो वहां पर वो इग्नोर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन चेकिंग फ्रीक्वेंसी 1 मिनट है। So to avoid the slippages and to avoid the probability of executing your means less probability of executing your trades, I think you should select check continuously. So the probability of executing the trades will be higher. And this is the capital required block. So ये ब्लॉक उन लोगों के लिए यूजफुल है जो अपनी स्ट्रेटेजीज को मार्केट बेस पे, ट्रेडट्रॉन्स के मार्केट प्लेस पे लिस्ट करना चाहते हैं। तो आपके सब्सक्राइबर्स को आइडिया रहेगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। ये कंप्लीटली एक ऑप्शनल ब्लॉक है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ओके, ये है टेक ट्रेड्स बिफोर आफ्टर बिफोर मार्केट, सॉरी आई मीन टू से आफ्टर एक्सचेंज ओपन एंड बिफोर एक्सचेंज क्लोजेस। इसका मतलब क्या है, सपोज अगर यहाँ पर 10 मिनट सिलेक्टेड है, तो हमारा एक्सचेंज ओपन होता है 9:15 को। ओके, अगर यहाँ पर 10 मिनट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, 9:25 के बाद, यानी 9:15 प्लस 10 मिनट्स दैट इज 9:25 के बाद आपकी सारी कंडीशंस चेक होना स्टार्ट होंगे। अगर 9:25 के पहले या 9:25 को अगर आपकी वहां तक कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो भी वो इग्नोर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने 10 मिनट सिलेक्ट किया हुआ है। सो टू बेटर, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 9:25 के पहले एग्जीक्यूट करवानी है या आपको मार्केट खुलते साथ आपको एग्जीक्यूट करवानी है, तो आपको यहाँ पर 1 सेकंड सिलेक्ट करना होगा। सेम गोज विद लास्ट कंडीशन चेक बिफोर एक्सचेंज क्लोज। अगर एक्सचेंज क्लोजेस है 3:30, फाइन। अगर यहाँ पर 10 मिनट सिलेक्टेड है, तो 3:20 तक आपकी कंडीशंस चेक होंगे। आफ्टर 3:20 आपके कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो इग्नोर की जाएगी। सो अगर आप चाहते हो कि आपके एक्सचेंज क्लोज होने तक आपको चेक करवाना है कंडीशंस, तो यहाँ पर आप 1 सेकंड सेलेक्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ एग्जिट के लिए रिलेटेड नहीं है, ये एंटायर स्ट्रेटेजी के रिलेटेड है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस सेटिंग्स जो है वो स्ट्रेटेजी लेवल पे वर्क करती है। फाइन। फिर यहाँ पर है और एक फंक्शन रोल ओवर एंड एक्सपायरी। तो जैसे नाम ही स्पेसिफाई करता है कि इसका फंक्शन है रोल ओवर करना एग्जिस्टिंग पोजीशंस को एक्सपायरी डे पे। सपोज एक्सपायरी डे पे आपकी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो उसको आप नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में आप उसको रोल ओवर कर सकते हो। आपके एक्सपायरी डे पे जो भी यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम रहेगा, जैसे अभी यहाँ पर 1500 है, दैट इज 3 PM, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर फॉर्मेट होता है। तो एक्सपायरी डे पे 3 PM को आपकी स्ट्रेटेजीज की जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस होंगे वो नेक्स्ट वीक पे एक्सपायरी पे रोल ओवर कर दी जाएगी। और ये है मार्केट प्लेस सेटिंग्स। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो अपनी स्ट्रेटेजीज को मार्केट प्लेस पे लिस्ट करवाना चाहते हैं। सो टू लिस्ट योर स्ट्रेटेजी ऑन ट्रेडट्रॉन्स मार्केट प्लेस, पहले आपको यहाँ पर पब्लिक स्ट्रेटेजी यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश टू मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर मंथली फिक्स्ड फी रख सकते हो आपकी स्ट्रेटेजी के लिए।
और मंथली वेरिएबल फी भी रख सकते हो। वेरिएबल फी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट होता है। आप यहाँ से ये आई बटन पे क्लिक करके इसकी इंफॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हो आपके स्ट्रेटेजी के जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए। आप मंथली, क्वार्टरली, पर 6 मंथ, पर ईयर, एज पर योर चॉइस आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर कुछ लोगों को अगर आपकी स्ट्रेटेजी को ट्रेडरॉन के मार्केट प्लेस पे लिस्ट नहीं करवानी है, इंस्टेड उनको अपने क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल या फ्रेंड्स के साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है या शेयर करनी है, आई मीन, तो यहाँ पर उनको पब्लिक स्ट्रेटेजी पे क्लिक ना करते हुए येस पे क्लिक करना है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी विद प्राइवेट लिंक ओनली। सो यहाँ पर वो येस क्लिक कर सकते हैं। इससे ट्रेडरॉन के मार्केट प्लेस पे आपकी स्ट्रेटेजी लिस्ट नहीं होगी। आप अपने स्ट्रेटेजी का यूआरएल जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे ही आपका यहाँ पर हो जाता है क्रिएशन, यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और आपकी स्ट्रेटेजी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है। डिप्लॉय पे जाके या तो आप पेपर ट्रेड पे ट्रेड कर सकते हो या फिर आप लाइव ऑटो पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप लाइव ऑटो क्लिक करोगे आपको आपका ब्रोकर सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आपका ब्रोकर सिलेक्ट करते हो आप यहाँ पर आप डिप्लॉय कर सकते हो। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग इट एज पेपर ट्रेडिंग। Just wait for a second. I think there's a network issue at now. Can you see my screen? Can someone please confirm you can see my screen? Can you see my screen? Okay, thank you very much. So like this you can deploy. Okay, यहाँ पर आप पेपर ट्रिप पे डिप्लॉय कर सकते हो या आप अपने ब्रोकर टर्मिनल पे डिप्लॉय कर सकते हो। सो फॉर नाउ मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ अपने पेपर ट्रेड पे। यहाँ पर आपको गो टू डिप्लॉयड पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पर दिखेगा आपकी स्ट्रेटेजी सी। ओके, so this is how you can create strategies in Tradetron. Okay, so if you have any queries related to this, please ask in the support this one. I mean to say chat box. So I will request everyone to please ask the doubts or your queries regarding this strategy creation. Okay, for any other selective or we can say customized doubts or queries you have. So for the specific queries, you can chat. You can come us to our support chat by clicking on this chat button. Okay, or you can even mail to us. So I will request everyone to ask queries or doubts if you have any regarding to this strategy. So one user is asking, I need recording of this session. So dear Arpit, this session will be uploaded on YouTube. You can check on Tradetron's YouTube channel. Yeah, Sajjan, you can we can help you to create strategy based on your requirements. You can create your strategy. You can come us to support chat and you can ask for the questionnaire form for the same. You have to fill that questionnaire form and within 2 to 3 working days, our team will reach you.
So one user is asking what condition to give to maximum 2 trades per day. So you can play around with the positions detail keyword. Okay, there is already a YouTube video uploaded for the same. Anyway, I will show you. So in positions detail keyword, you can select here as entry, and please note that this keyword will work on entire strategy level. So I'm assuming that your instrument is Nifty Bank. So in context of Nifty Bank, I will give you an idea how to restrict trade. So this should be less than or equal to number 50. Okay. So now this condition will check whether the quantity traded for the entry will should be less than equal to 50, because one lot of bank nifty is of 25. So in first entry it will be first 25. So this condition will be true and it will check. In the second condition it will be 50. So again it is getting checked. It is getting satisfied. But in the third counter, the quantity will be 75, because already two lots are traded. So in that case, this condition will be hold. I mean to say, this will be false, and this will not take the third trade. So one user is asking, this strategy can be applied on list of stocks. Yes, you can apply it on list of stocks as well. So one user Nagesh is asking about the price execution impact. So price execution will impact while entering or exit also. Yes, it will impact while entering and exit. Whatever settings you are placing in advanced settings, it will work on the entire strategy. Okay, I am iterating this again. So please note about this one. So if you have selected the best price and with 4 ticks and 4 seconds, the market condition affected tranching speed. Yes, definitely the tranching speed will be affected due to the customized as compared to market price. The tranching time will be taken. I mean to say tranching speed will be lower as compared to market price, because in terms of market price, whatever price is available in the market, it will be taken like the orders will be taken on that price. But if you are selecting the best price, then definitely best price as the time specified over here is 4 seconds. So the execution tranching speed will be affected due to this. So it is always advisable to use marketplace only and only if you want to take your trades. Means I mean to say, if you don't want to miss your trades, the probability of missing the trades is very much less in market price. So advisable है कि आप market price use करो. And again, if you want to see the free trades are not in anyone's control, so that can't be avoided with the best price as well. That might be a possibility कि आपका जो limit price है वो never reach मतलब वो it will never reach your limit price. The market will never reach your market price. So one user is asking, I'm unable to code strategy on EMA. So can you people help me out? Yeah, as I already told you,
you have to fill the questionnaire form for this customized strategy creation. You can have the form by here by clicking on the support chat. You can ask for the custom strategy form over here. Okay, and our support cons will help you out with the form. So one user is asking how many sets I can make in one strategy. So there is no as such restriction for the same, but however, it is always recommended to make your strategies, I mean to say, code efficient, so that the latency will be very much lower. So if you're using too much conditions and too much sets in your in one strategy, then there might be possibility that the latency will be compromised. So Prasanta, one user Prasanta is asking, can I set TSL dynamically based on some conditions? Yes, Prasanta, definitely you can do it, but it will require custom Python coding for the same. Okay, so you can have the Python code done by our cons team if you want. So you can come us to support chat over here, and we will share you the questionnaire form for the same. So I don't see any new questions over here. So I think we are pretty much done with this webinar. So thank you for joining this webinar. Have a happy weekend.